Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today I have with me special guest Anupama Yadav, who has recently cleared SEBI Grade A exam. So Anupama, I welcome you, and Thank you, sir. I want to congratulate you on this big feat, especially taking into account your background. मतलब आप ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ना ही आपने कोई बहुत प्रीमियर कॉलेजेस से एमबीए किया है, बट स्टिल यू मेड इट. आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर बिलीफ इन योरसेल्फ and your hard work. So congratulations. Thank you so much, sir. So Anupama, how are you feeling right now? Sir, very excited. Very excited. So now you would be moving away from your hometown to Mumbai. So do you have Yes, sir. any fear of moving out of Mumbai? Yes, sir, of course. Actually, when the result was out, I cried a lot. Then my father asked me to go and join because opportunities won't come again and again. If you are getting an opportunity, then you should go. So very, very nice thought. So let me tell you briefly about Anupama. She is from Kanpur and she's right now working also. She in her educational background, she has done BCom and she has also done MBA from Chandigarh Group of Colleges, Chandigarh. So Anupama, my first question to you is, how did SEBI happen? I mean, how did you decide that I'll give SEBI? Was it a kind of accident or was it planned and you were preparing for SEBI even before the notification came? no, actually, it was an accident only because I was searching for the upcoming exams. Then I come across that SEBI exam is there. So that was happened. So then I filled the form and started preparing for the exam. So this was your first attempt, Anupama? No, sir, this was my second attempt. In a previous attempt, I was not able to clear mains. So this time I decided to at least prepare in a planned manner so that I can get good marks in mains. So Anupama, आपने सारी तैयारी कहाँ से की थी? Sir, if I say 90 to 95% I relied on EduTap course only. I bought the video course of EduTap and practiced MCQs from there only and mock interview from there only. So EduTap. So when you were preparing from EduTap course, how are you feeling at that time? Did you feel that it is comprehensive and this is what you require for the exam, or did you also try to study from somewhere else? No. What you need to do is to just rely on one source and trust that source. And if possible, then try to revise as many times as possible before exams and clear your concepts. And this is what require, I think. And if you are going through multiple sources and not able to revise it, then it won't be able. You won't be able to clear the exam. So that's the problem. So rely on one source and revise it. तो अनुपमा, वैसे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि किसी के साथ भी हो सकती है कि जब हम एक सोर्स को पकड़ते हैं, हमें उस सोर्स पे ट्रस्ट नहीं बनता है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे करियर का मतलब हमारा करियर स्टेक पे होता है, तो वो बहुत नेचुरल है. तो आप में वो ट्रस्ट आया कैसे कि मुझे यही करना है? मतलब किसी ने आपको बताया कि अच्छा है, किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट ने बताया, या आपने खुद पढ़ के वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया? वो ट्रस्ट आपने कैसे गेन किया? Like in the beginning, I saw some toppers videos. So they said that EduTap is a good source if you are going for especially regulatory bodies. So then after that, I go through the MCQ videos and the revision series that you bought on YouTube. So I find that helpful. And so after that, I decided to bought the course and started preparing. So that was it. So what is the overall time you spent in your preparation? कितना time लगाया आपने? Sir, actually, I started preparing for the exam last December. Then notification came on January, I guess. So basically, मतलब 3-4 महीने ही आपने तैयारी की इस साइकिल में, बाकी you have already studied some part of it in the previous cycle. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो अनुपमा, जब आप तैयारी कर रहे थे, what were the major challenges in front of you? एक तो टाइम मैनेजमेंट था, उसी की बात टाइम मैनेजमेंट. Yes, sir. Since you were working or you're already working in PNB,
So time कैसे मैनेज करते थे आप? So time management, actually, waking up early in the morning, like 6 o'clock, sometimes some day in 5 o'clock, then studying for 3 to 4 hours, then going to office, coming back from the office. Then I remember around 6 p.m. or 7 p.m. YouTube session was there, revision series from EduTap. I joined that. Then after that, 1 hour for dinner. Then from 9 to 12 o'clock, 1 o'clock, even sometimes it happened like I'm studying till 2 o'clock, then again waking up in the morning at 5. So that happened. बहुत सारे sacrifice है जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं and that's the reality. No pain no gain. हम सोचते हैं रिजल्ट हमें मिल जाए उसके लिए कुछ करना ना पड़े. That is not the right expectation. So Anupama has worked very hard, I would say, and she's telling you about her schedule. मतलब आप वो करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि how much you need to sweat to prepare for these exams. Okay, Anupama, now there are 6 subjects. I mainly talk about paper 2, right? Our costing, finance, management. So there is huge syllabus for paper 2. Is it really manageable? मतलब हो सकता है 4-5 महीने में. What would be your suggestion to the students who want to prepare for SEBI? When should they start preparing? I think if you are a working candidate, then 6 to 7 months minimum. If not working, then 3 to 4 months would be enough. But make sure that if you are studying, then your concentration is there only. Either if you study for 4 hours, then you have to study 4 hours. You should not use any other sources, or like you are studying for 2 hours and then roaming here and there and using mobile phones. So this should not be done. If you are studying, then your focus should be on study only. Distraction नहीं होना चाहिए basically. Distraction नहीं होना चाहिए. Exactly. And what as per you are the most easiest and the most toughest sections out of these 6 sections or six subjects? कौन से subject सबसे easy हैं? सबसे easy सर मेरे को companies that लगा. Because I revised it multiple times, and when I was there in the examination, in mains exam, so when I saw the question, I just ticked it. So if you are revising it and you are able to memorize the facts, then companies that is the easiest one. And if I'll say difficult, then commerce and accountancy, because numericals were quite hard this time. So yeah. Or how do you suggest the planning for the preparation? I mean, one should start all the subjects at one go. के एक दो करके subjects को we should start and we should complete, and then we shall move on to next set of subjects. So what I did was first I completed one subject, then took another one. So like this I completed, not simultaneously, because if you are studying one subject, your concepts are going to clear, and that will add value to your preparation. Like if you are studying one subject, giving more their mocks. So that I used to do. And any particular sequence for preparation of subjects के पहले company law कर लो, management कर लो, easy वाले, या फिर एक आसान उठा लो और एक मुश्किल उठा लो? What was your sequence? और now depending upon your learning, what is the sequence जो आप बच्चों को suggest करेंगी? Sir, sequence doesn't matter, but फिर भी जो मैंने किया था, so सबसे पहले I started with the management, then costing, then accounts, then finance, and last में economics, and उसके बाद जो हमारा बचता है companies act. तो शुरू आसान से किया, बीच में मुश्किल निपटा लिया और एंड में फिर थोड़ा आसान. एंड में companies act लास्ट में, because अगर आप लास्ट में पढ़ते हो उसको, तो you'll be able to memorize the facts. Like section number हो गया, penalties हो गई, so that's why. In exam, as per you, all the papers or all the subjects are having equal kind of weightage? Finance, costing, commerce and accounts? Yes. तो मतलब सबको ही पढ़ के जाना पड़ेगा? 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे होगा, नहीं तो इक्वल था. Because कई लोग क्या सोचते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं 5 सब्जेक्ट कर जाता हूँ, एक छोड़ जाता हूँ, 5 के बेस पे ही एग्जाम निकाल लूंगा. I think that is really tough, right? I mean, especially in phase 2. So what is your take on that? सारा ही पढ़ के जाना चाहिए, right? सर सारा पढ़ के जाना चाहिए, and you never know कि आपने जो सब्जेक्ट छोड़ा उससे सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आ गए.
and then after that you'll regret that कि अगर मैंने पढ़ लिया होता तो मैं कर देता। तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब फेज 1 फेज 2 दोनों की। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब नाउ द जनरल परसेप्शन इज दैट इकोनॉमिक्स इज टफ, और अभी काफी लोग मुझे पता है इस साल इकोनॉमिक्स एंड के लिए छोड़ेंगे, दे विल नॉट स्टडी इट, एंड यू नेवर नो दैट नेक्स्ट ईयर इन द इकोनॉमिक्स द क्वेश्चंस आर रियली इजी। Yes, so sir. never take such chances. That's a really good suggestion. Now moving on to the next question, Anupama, if I talk about management, now management is taken to be pretty easy subject, right? Yes, Theory hai, once you read it you can solve all the questions, but this year questions were tricky. Yes, sir. They were more of application based and not bookish. So how would you prepare for management, if you're preparing for next year? Obviously you are not, but if somebody else is preparing for next year, what would be a suggestion for management? Sir, management is basically you have to memorize lots of theories and the facts. So the thing is you need to pick up the keywords. Like if any theory is there, you need to pick up the, like motivation theory is there, then leadership theories are there. So there are many theories, many things you have to remember. So if you will pick the one keyword, that will be helpful. And exam में देखिए, अगर if you are sitting in the exam and giving exam, then you should read questions as well as options very carefully, very carefully, because I remember I didn't read the question properly in a rush. So I took the wrong option, and after that I realized I did a mistake. So that should not be happened. That happens sometimes. Yes, sir. और the exam में इतना pressure होता है कि time का pressure, time is running, so you rush with your exam की जल्दी कर लो. At least theory part आप मतलब आप कर लोगे, तो जो numerical से you can give time to that. So I can understand, and that is what I always tell our students कि भैया 40 मिनट है, 50 क्वेश्चन है, सिर्फ अच्छी तैयारी करके कुछ नहीं होगा, आपको वो हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शंस को सही से देखना, इंट्यूशन और गेस वर्क लगाना, इजी क्वेश्चंस को पहले करना. सो देयर इज लॉट एट स्टेक. यू कैन नॉट जस्ट रिलाई कि मैं पढ़ के चला गया हूं तो मेरा पेपर अच्छा होगा. एग्जीक्यूशन मैटर्स. नाउ मूविंग ऑन टू कंपनी लॉ, lot of penalties, lot of facts, lot of section numbers. Matlab, sometimes it feels like no, you should just give up company law. So यहाँ पे इस बार बहुत easy आ गया, scoring भी था, but otherwise how easy or difficult it is to remember so many facts, and what was your strategy? Sir, what I did was I wrote the penalties in one paper and used to revise it in the morning. Even I remember one night before exam, like prelims one, so my sister told me revise penalty, revise karo. I revised that, and when I was giving the exam, so question came from the penalty only, and I was, I revised that last few hours only, so I was able to pick it. So that happened. And sir, if section number के लिए sir आप chapter wise जैसे होता है ना, is from like section 1 to 25 in chapter 1 or chapter 2, so that way if you will go, so it will be easy for you to remember the section number. So but section numbers सारे याद करने तो possible नहीं है. So नहीं सारे. Which were the section numbers you gave importance to? Like जो appointment से related होते हैं, या कुछ अपॉइंटमेंट्स वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. बाकी रजत सर टोल्ड कि ऐसे ऐसे आप याद करो चैप्टर वाइज, तो आपको याद रहेंगे वो चीज. प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जो होते हैं सेक्शन नंबर, वो इंपॉर्टेंट होते हैं. कोई पावर से रिलेटेड हो गए, हाँ पावर से रिलेटेड हो गए, वो इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. तो कंपनी लॉ में मतलब आप बार बार पढ़ेंगे तो रट्टा थोड़ा लगाना पड़ेगा, बट इट कैन बी मैनेज्ड. हाँ सर. और कमर्स सा रट्टा लगाइए उसको 2 बार 3 बार. Now coming out to commerce and accounts, बहुत सारे concepts हैं वहाँ पे. There's a lot of numericals also, similar in costing. So numerical is one thing people are really fearful of. I can understand that it is not that easy to do numericals, but again, if you want to aim for SEBI, you will have to do them. But in reality, what do you think कि जो numericals हैं,
उनको कितनी डेप्थ तक we have to do it? Do we have to do all the numericals that are given in books or somewhere else or in the course, or do we have to focus on simple numericals which are formula based, or concepts पे ध्यान रख के basic numericals करने चाहिए? What is your take? Sir, concept is more important. Then आपको पता होना चाहिए कि like numericals are lengthy. In the exam, like numericals were lengthy, but there was only few data that you need to take up for your solution. So वो आपको पता होना चाहिए, और प्रैक्टिस तो आप जितनी कर सके करे, और इजी डिफिकल्टी का नहीं होता सर. यू नेवर नो एग्जाम में इजी आएगा डिफिकल्ट आएगा. लाइक आई रिमेम्बर कि लास्ट ईयर जो पेपर था वो काफी इजी था, न्यूमेरिकल्स उसमें इजी थे, बट दिस टाइम इट वाज नॉट देयर. सो न्यूमेरिकल आपको हर लेवल के प्रिपेयर करने चाहिए. फॉर्मूला बेस्ड आप करें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू विल बी एबल टू डू इट. And what is your have you got your marks now? Yes sir. So how much marks have you got in phase 2 paper 2? Sir, phase 2 paper 2 I got 65. I did 40 questions, so some negative. 40 questions and you got 65. And what about paper 1? Sir, paper 1 I got 58. 58. So has SEBI also released the cutoffs? No sir, not yet. Only marks have been released. Yes sir. और इंटरव्यू में? इंटरव्यू सर बहुत खराब मार्क्स दिए. कम आए? I don't know how. Yes sir. कितने आए? 7. Fine. But you got really good marks in paper 2, 65, considering that it was really tough. So I said at that time also that 65 to 60 is a really good score in paper 2. I think that is what saved you. Now coming on to economics. Now economics is also a mixture of bit easy and tough, because there is a very tough part like Keynesian approach, multiplier function, consumption function, yes, and then there is an easy part also, like inflation. Inflation is there. Then NBFCs is there. Balance of payments is there, which is like macroeconomics. And paper of economics was also little difficult this year. In-depth questions were asked. For example, Carnot's oligopoly model and all. So how do you suggest preparing for economics now, since you have got a lot of learnings from these 2 years? Economics की कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत वास्ट है. देखा जाए तो सारा सिलेबस यूजीसी का सिलेबस है वो, बट वी कांट रीड दैट मच. सो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सर स्ट्रेटजी मैं EduTap पे ही रिलाई की थी. लाइक मैं आई टोल्ड कि मेरे सारे सोर्सेज EduTap का ही कोर्स मैंने लिया था. सो आप उसको रिवाइज करो, एंड जो यूट्यूब में रिवीजन सेशंस आते हैं, मैम लिख के आती है, तो आप उसको मतलब कि अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो बाद में एटलीस्ट देख लो उसको. सो दैट वाज हेल्पफुल. देन प्रैक्टिस एज मेनी MCQs एज पॉसिबल बिफोर एग्जाम. तो आपने सारी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी जो भी कोर्स में थी? हाँ सर. Even were you able to understand that Keynesian approach, consumption function, multiply function, because that is a really tough part? Yes sir, yes sir. Sir, I revised it 2-3 times, and then doing MCQs, and then if I got any question wrong, then to analyze where I was wrong, why it didn't happen. Like if you the ISLM curve हो गया, तो आपको concept clear होनी चाहिए. अगर आपके ग्राफ अगर आपको याद है तो I think कर सकते हो questions उसके. तो so I think again it's all about having a good understanding there, right? Yes sir. ग्राफ समझ आ गए तो हो जाएगा. Do not try to cram it. Sir, economics cramming would help. Won't help, right? Economics, yes sir. Or Anupama, current affairs, how much is the importance there? I think phase 1 में GA में in phase 2, yes sir, yes sir. In phase 2 current affairs का part होता है. In phase 1, sorry. So in phase 1 में आपका current affairs का rule होता है. In phase 2 I don't think एक भी question था. 1 या 2 होंगे, बट उससे ज्यादा नहीं था. सो करंट अफेयर्स आपका प्रीलिम्स में ध्यान दीजिए. मेंस के लिए आपको जो आपके 6 सब्जेक्ट है उनको जितना रिवाइज हो सकता है उतना करिए. And how did you tackle the revision part? Because when we read so much, and by the time exam date is very near, we start feeling कि यार सब कुछ भूल गए, कुछ याद नहीं है.
So how did you handle the revision part? Were you revising on regular basis, or first you completed the syllabus and then revised? Sir, first I completed the whole syllabus. Then before phase 1, I revised it once. Then जब आपका phase 2 आता है, तो आपके पास काफी time होता है. You can revise it twice. If you are not able to revise it twice, at least revise it once and practice as many mocks as possible. And I remember giving all India test. So ये आप कर सकते हो. मतलब full length mock अगर आप दोगे, तो you can analyze where you are standing. You just talked about mock test, Anupama. So how many mock tests did you give in all, the full length mock test for paper 2? Sir, EduTap में जितने थे मैंने सारे दिए. ऑल इंडिया मॉक टेस्ट थे 3, 5 फुल लेंथ थे शायद. और आपने हमारा एमसीक्यू कोर्स भी लिया था अलग से? सर हाँ, मतलब मेरे पास था वो. उसमें भी शायद 5 है. तो आपने मतलब 15 तो EduTap के ही मॉक टेस्ट दे दिए. फिर अराउंड 5-6 हजार एमसीक्यूज चैप्टर वाइज थे, वो भी आपने किए? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. तो वो मेरे को याद है कि आफ्टर फेज 1 जब हमारा रिजल्ट आ गया था, तब वो एमसीक्यूज आए थे 5000. मतलब नहीं, पहले आ गया था. तो आई थॉट कि इसको अभी परसों एग्जाम है मेरा फेज 1 का, एंड अभी ये एमसीक्यू करूं. तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं करूंगी, फेज 2 से पहले करूंगी इसको. तो मैं वो पूरे की थी चैप्टर वाइज. So you basically did around 10,000 MCQs, right? Around about 10,000 MCQs. Yes, sir. Okay. Now, Anupama, let's move on to the descriptive English part. Descriptive English is again something I would say is ignored, though it is still 100 marks, having 1/3 weightage. तो 100 में से मतलब 85 marks का आपका, हाँ 30 मतलब 1/3 weightage है उसकी, though it is 100 marks. So still it is important. I would not say that that is not important. So descriptive English के लिए पर लोग ज्यादा पढ़ते नहीं, आखिरी 3-4 दिन में जितना हो गया कर लेते हैं. What was your strategy in that regard? सर last 2 weeks मैंने मतलब लैपटॉप में किया प्रैक्टिस. So and I read मतलब like material was provided by EduTap. So I go through that topics. उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना, फिर चेक करवाना, मतलब अपने कलीग से कि प्लीज चेक रेक्टिफाई करो अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो डेट आई डिड. एंड इन एग्जाम लाइक लोग बोलते हैं कि आप ऐसे सबसे लास्ट में करो, एंड देन वो छूट जाता है क्योंकि आरसी इतना लेंदी होता है. तो व्हाट आई डिड, आई फर्स्टली कंप्लीटेड माय एसे, then Pressy, then when I saw the RC, it's lengthy, it was quite lengthy. So पहले मैं उसको स्टार्ट करना पढ़ना स्टार्ट की, मैंने कहा नो इट वोंट हेल्प. मैंने उसको एक बार गो थ्रू किया, देन आई जंप टू द क्वेश्चंस. सो कोई आप क्या सीक्वेंस सजेस्ट करेंगे? आरसी पहले करना चाहिए, आरसी लास्ट में? आरसी लास्ट में ही करना चाहिए. तो एसे, प्रेसी एंड देन आरसी. यस सर. एंड हाउ वाज द इंटरफेस? इंटरफेस काफी गंदा रहता है एग्जाम में. इंटरफेस सर मेरे को भी थोड़ा इशू हुआ था, बिकॉज मेरे को बीच में कोई एक सेंटेंस था उसको हटाना था, उसकी जगह कुछ और लिखना था. बट जब मैं वहां गई, मैंने उसको, मैं जैसी स्पेस का बटन लगा रही थी वो लास्ट में आ जा रहा था. तो फिर आई टाइप्ड होल सेंटेंस विदाउट एनी स्पेस, देन आई स्पेस्ड गिव द स्पेस टू द सेंटेंस. सो इंटरफेस में प्रॉब्लम था. ठीक है. और आपने जो मॉक टेस्ट दिए थे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए, वो कितने दिए थे? सर मॉक नहीं दिया मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए. कोई नहीं दिया. You were writing individual essays and getting them evaluated from your colleagues. Yes, yes sir. So आपको भी क्या लगता है कि कंटेंट होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर कंटेंट इज वन पार्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड आल्सो वर्क ऑन बिल्डिंग टाइपिंग स्पीड, रिड्यूसिंग एरर्स, स्ट्रक्चर एंड फ्लो? मतलब मन में क्या रखना चाहिए इफ वी थिंक दैट हमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में अच्छा करना है? व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी? सर कंटेंट तो होता ही इम्पोर्टेंट, देन वर्ड लिमिट एक्सीड मत करिए. मेरे को याद है मैंने ऐसे में ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स मैंने ज्यादा लिख दिए थे, फिर मैंने उसको डिलीट किया. तो वर्ड लिमिट आप याद रखिए. एग्जाम में आप देख रहे हैं सामने काउंटर चलता रहता है काउंटिंग की, आपने कितने वर्ड्स लिख दिए हैं, तो वो चीज है. उसके बाद आप, हाँ, पैराग्राफ में अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. लाइक पहले इंट्रोडक्शन हो गया, देन बॉडी पार्ट एंड द कंक्लूजन. और आरसी के आंसर्स आपने पैराग्राफ में लिखे थे या पॉइंट्स में? सर आई रोट इट पैराग्राफ वाइज. पैराग्राफ वाइज. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटरव्यू, अनुपमा. सो वेयर वाज योर इंटरव्यू हेल्ड? दिल्ली?
Yes, sir. Delhi on 9th June. I remember the date also, the classic date, right? And how many members were there in the panel? So there were 4 members, one chairman and 3 other members. One was lady. What was the first question that they asked you? First question was about introduction. So, That's it. I introduced myself. You introduce yourself. So, nervous थे आप interview में या they made you comfortable? No, I was not nervous. So, comfortable था. It was a cordial kind of interview. Yes, sir. What did they ask you from the HR side apart from now introduce yourself? Did they ask you anything else from the HR Only side? family background. Family background. No strengths, no weaknesses, No, no goals, no, sir. nothing of that kind. So, what was the main area on which your interview took place? Current affairs or about SEBI? What was the main area? Sir, about SEBI website, then current affairs, then recent penalties जो ही है वो. उसके बाद जैसे मैं बैंकिंग से हूँ तो फिर PSL टारगेट्स का भी पूछा था, GDP भी पूछा एंड NISM से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. NISM से रिलेटेड क्या पूछा उन्होंने कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करती है? सर लाइक मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स उसका किया हुआ था. तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि क्या पेनल्टी होती है और बैंक में क्यों ये जरूरी है, तो ऐसे. So basically it was derived from Yes, this question was derived from what you fed them because you have done NISM courses. Did you give any mock interviews before your actual interview? Yes, sir. EduTap interview I gave. उसने कितना help किया? Sir, like they हाँ. तो सर like सर ने मेरे से insider trading पूछा था, recent penalty. So that I was not able to told him. So in the real interview also, like first they asked what are the role SEBI does. So I told them like all the मतलब penalties लगाना, illegal activities control करना, regulation, recognition. तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है insider trading. So उसके बाद उन्होंने मतलब कि क्वेश्चन था इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है और अभी कोई आप केस कोट करिए इसका. तो आई कोटेड लाइक टाइटन 1 एंड द पीसी ज्वेलर्स. तो पीसी ज्वेलर्स के आगे फिर उसका क्या हुआ, कंक्लूजन क्या था, फिर वो मैंने बताया. सो ऐसा हुआ. तो आपने हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स भी यूज किया था? हाँ सर. वो कैसा लगा आपको? अमेजिंग. व्हाई अमेजिंग? बिकॉज सर अगर आप जैसे हम लोग गूगल करते हैं ना कि व्हाट सेबी डज, वो 3 फंक्शंस आ जाते हैं जो कि इंटरव्यूअर्स सुन के बोर हो चुके हैं. बट अगर आप कोर्स में आपने जाएंगे तो मतलब उसमें सब दिया हुआ है कि इनसाइडर ट्रेडिंग को करता है और क्या इलीगल एक्टिविटीज को करेगा और जितने मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रेगुलेट करना, रिकॉग्निशन करना स्टॉक एक्सचेंजेस का. तो काफी सारे फंक्शंस आ जाते हैं उसमें. तो सेबी की वेबसाइट में से क्या-क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए? अबाउट सेबी जो आप उसमें जाओगे तो आपका वो मिल जाएगा. चेयरमैन कितने हैं, अबाउट डिपार्टमेंट्स लाइक 14 नियर अराउंड 14 डिपार्टमेंट्स आर देयर. तो वो पढ़ लीजिए. देन जो एनुअल रिपोर्ट है सेबी की वो एक बार आप गो थ्रू कर ले. रिसेंट जो सर्कुलर्स अपडेट करते रहते हैं वो आप एक बार कर लिए. जो प्रेस रिलीज होती है वो अपना किया था. और सर्कुलर्स वगैरह भी पढ़े थे? हाँ सर, सर्कुलर्स पढ़े थे. सर्कुलर्स भी पढ़े थे. और करंट अफेयर्स में हाउ डिड यू प्रिपेयर? वर यू रीडिंग एनी न्यूज़पेपर? सर मिंट में आते रहते हैं, जैसे आर्टिकल्स आता है सेबी से रिलेटेड. तो करंट अफेयर्स बेसिकली मेरा सेबी रिलेटेड ही था और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा. आरबीआई की जैसे 9th को मेरा इंटरव्यू था, 8th को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज हुई थी तो वो मैंने रात को पूरा पढ़ा. तो वो था. ठीक है. So Anupama, our viewers are commenting that you got 7, which is a very good score in this year's interview. So I think इस साल शायद सबको ही कम स्कोर मिला होगा. And one person is asking, ma'am, can you please reveal your scorecard for phase 1 and phase 2? I think we have already discussed the scorecard for phase 2. Anupama got 65 in paper 2 in phase 2, 58 in paper 1, that is descriptive English, and 7 in the interview. What was your score in phase 1 paper 2?
Phase 1 Phase paper. 1 paper to 79. Wow, 79. That's really good, Anupama. It means you were well prepared. That's why you got 65 in phase 2, because phase 2 was relatively tough. And Yes. anyway, phase 1 paper 1, I think score does not matter. She would have, I mean, all that matters is that she got that 30%. Apart from that, even she got 100%, that is not worth discussing. So Anupama, it's really nice talking to you. I think it's your hard work which have made you achieve this milestone. Getting into SEBI is no easy task, and just because of your hard work and dedication, I'm pretty sure that no, you have done this, because आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था और आप वर्किंग भी थे, तब भी आपने इसको चैलेंज को लिया, एक्सेप्ट किया और अपने आप को प्रूव किया है. Any last message, Anupama, that you would like to give to our viewers or to the aspirants who are preparing for the next year? Okay, so those who are preparing for next year, prepare well and revise as many times as possible, and be confident and trust your source. Either you can choose one source and you have to rely on that. Trust that source and revise it multiple times. And those who are not able to make this time to the finalist, so gather yourself and try hard next time. Luck will favor you. Thank you, Anupama. Such a nice message. So I wish you best of luck, Anupama, and Thank you, sir. I hope that you will be able to learn and grow in SEBI. Bye bye.